So very good evening, everybody. So let us check quickly NPV questions here. You see NPV questions here. Right. So I've given you 3-4 questions for homework. First, let me quickly revise time value of money. Right. Future value wala question. Did we do future value wala question? Simple interest method by compound interest method. Correct. Tell me, is simple interest method ever used? Never. What is the formula for simple interest? Initial investment or present value of the initial investment plus bracket में, correct? Or I could say multiply. Plus नहीं करते हो, multiply 1 plus what? Interest rate into n. We verified all these formulas. Tell me. Then we went into what? Future value by compounding interest method. Correct. Were you okay with future value by compounding interest method? Tell me. So it is nothing but future value after n years is PV now multiplied by 1 plus interest rate raised to n. Correct or not? So 100 into 1.08 cube. Here you have to do raised to n and not multiply by. Make sense? Tell me. You understood how to do this on normal calci. You understood how to do this on scientific calci. Sab kuch. There was something, everything that you understood. Tell me. Then we said what? From the present value formula, we got, sorry, from the future value formula. So today's cash flow, you take it ahead, future value. Future value ka cash flow, you bring it to zero here. What do we call it? Tell me. Finding the present value. What do you do? Do you pull the cash flows? Tell me. You pull the cash flows. Correct again? Take a look. You pull the cash flows and bring it to zero. Okay. Bolo. Any problem? Did you all revise this present value, future value? इसमें कोई problem था किसी को? बोलो. Raised to minus and then we went to what? Future value is equal to 1 divided by 1 plus discounting rate or interest rate, whatever you want to say. The whole raised to n, which could be written as future value into 1 plus interest rate or discounting rate raised to minus and denominator bringing it to numerator minus, and we even what? Saw that it is same. Correct or not? देख लो कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन प्रॉब्लम क्वेरी डाउट बोलो चले then 7,500 into 1.05 oh sorry 1.15 raised to minus 3. Can this be derived from the present value table? Now tell me, I don't know how you have done it, but now tell me, are you getting a confidence that was whatever is done here, all these things correct, whatever, right? This makes sense or this does not make sense? Tell me. I don't know. You must have done discounting some or the other way. Tell me. किया है कि नहीं किया है? Tell me. Done or not done? Tell me. किया है कि नहीं किया? Tell me. Here discounting some or the other way you must have done. Have you understood it like you understood it yesterday? Derivation and all that. Yes or no? No, sir. समझा कि नहीं समझा? बोलो. पहले ऐसा समझा था क्या? लॉजिक के साथ समझा अभी. Why are you doing this? उसका लॉजिक समझा. Yes. Okay, right? Quickly. बढ़िया. उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, right? So when I go one more step ahead, I said, what was there only one cash flow that I gave cash inflow, or were there a number of cash flows that I have given, and you have to pull it back to 0 years and then compare with the initial investment, right? If the present value of or sum of present value of all future cash flows, वापस repeat कर रहा हूँ, sum of present value of all future cash flows, right, is taken and compared with the initial investment. If sum of present value of all future cash flows is greater and initial investment is lower, will there be positive NPV or negative NPV? Tell me. Positive. Positive NPV. But if what sum is lower and initial investment is higher, what will happen? Tell me. Negative NPV. Will reject the project. Correct. So that means
Will you reject the project or accept the project? Reject. Also, we understood that when you pull all the cash flows by whatever rate, so what the rate that you use generally, is it the cost of bringing the capital, or is it the borrowing rate, or is it what? Tell me. Some other interest rate that is there in the market. Tell me. Cost of bringing the capital. Is always going to Cost be of capital. उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता है. Without that work, we will be not be able to survive this part. Correct? देख लो. Make sense? Okay. Right? देख लो. Tension कोई. NPV is equal to what? Negative initial investment plus sum of present value of all future cash flows. This was the formula for NPV. Then we did a lot of what? NPV का part. Right? ठीक है. हाँ. One more part. When I say NPV is positive, correct? Is the return of the project, that is IRR, higher or cost is higher? Think about it. Return is higher or cost is higher? NPV is positive. Return is higher. Return is higher. But if I say NPV is negative, that means project is giving less return or more return? Less return. Yes, return. बराबर है क्या? देख लो. We did all this. Weighted average cost of capital is generally discounting rate, otherwise given, correct? If there is another, generally it is WACC, correct? That is. ठीक है. Then now we are doing NPV analysis. चलो आ जाओ. इधर का NPV first इसका 6% per annum and these are the cash flows. बोलो, what is the NPV here? 336.25 negative. 336.25 negative. Negative. What is the second का answer? एक minute. What I want to say second में. See, from here I have increased only one thing. What is the one thing that I have increased? Tell me. Initial investment. Initial investment. So if I want to write analysis, चलो बताओ how much is NPV? Tell me. 836.25. Negative. So 8 minutes. If my initial investment increases, will my NPV fall or NPV rise? Tell me that first. NPV falls. False. That means will the project get worsen off or will get better off? Tell me. Worsen off. Worsen off. So 8 minutes. If I write here in this table. Here. Somewhere below this, leave some 2-3 lines, maybe something to be written. Write down note. Correct? Note. If initial investment goes up, what happens to NPV? Tell me. NPV goes up or goes down? Falls or rises? False. Correct? But if initial investment goes down, what happens to NPV? Rise. इसमें कोई problem? Tell me. What do you say? Okay. Tell me. कोई टेंशन? चलो मैं आगे. चलो. Then come to the other analysis part. Third one. Now see, first discounting rate was 6% here. Now it is going to 8%. What is happening to NPV here? NPV version of 1072.5 negative. 1072.5 negative. That means 8 minute. If my discounting rate goes up, will my NPV fall or NPV rise? NPV falls. False. Right? But here, instead of 8%, high minute. Instead of 8%, 6% होता. So your NPV would have been higher. मतलब अगर main table में नीचे note present value, discounting rate goes up, what will happen to NPV? Fall. If discounting rate goes down, what will happen to NPV? Goes up. Goes up. ये मैं क्यों दे रहा हूँ? There are questions, theory questions which ask you this. That let's say there is a project which is giving a positive NPV of 500, right?
Now they will not give any other amount, correct? Or they will say that it is giving a positive NPV, correct? And they have decided that earlier initial investment was 5,000. Now initial investment is 6,000. What do you think will happen to the NPV? बराबर है ना? Can this be an MCQ? Tell me. Yes, sir. Okay, yeah. Tell me. Can I go ahead? Chalo. Yes or no? Okay. If that is okay, let's go one more step ahead. Now, if all the inflows go up by the same amount, what happened to the NPV here? Did it go up or go down? Tell me. Obviously, Goes up it has gone up. ठीक है. कितना होगा? How much is negative? 74.25 negative. एक मिनट आराम से. Yes, 74.25 negative आ रहा है. 674 74.25. negative. Everybody getting 674. सिर्फ 74 है. कितना कितना? सिर्फ 74. 74.625. ठीक है. 74.2, 74 point या 74 या 75 negative. ठीक है क्या? हाँ. That means if cash flows, यानी अगर मैं बोलूं, एक मिनट, here we have to write it properly. If cash inflows everything else remaining, हाँ, now what here? So initial investment मतलब क्या? Everything. तो इधर ऊपर लिखना चाहिए मैंने everything else remaining same, और ये इधर लिखना चाहिए everything else remaining same between two projects. Means what? If I'm talking about initial investment, impact on NPV, so all the cash flows and discounting rate will remain the same. So in both the situation, discounting rate is same, but initial investment increased. What will happen? Tell me. NPV will decrease. Correct? देख लो. क्या लगता है आयुषी? Tell me. Makes sense or does not make sense? Yes. So if cash inflows go up, what will happen to NPV? NPV will also go up. But if cash inflows go down, what will happen to NPV? Will go down. So we have taken care of all the aspects that are there. Make sense or does not make sense? Tell me. देख लो एक बार. If you're not understanding, now is the time to ask me. ज़्यादा complicated नहीं है. If you have solved too many questions of NPV, it is straightforward, quite straightforward. चलो आगे. Now come to it, right? हो गया. NPV एनालिसिस हो गया, ये हो गया, right? Now let me go to decision criteria. आ जाओ. Net present value. Decision criteria. Write down NPV, project A and project B. Correct? NPV. इसका है positive 5,000. इसका है positive 7,000. So which project would you choose, A or B? What is better? Positive 5,000 is better or B. positive 7,000? B. B. Project B will be chosen. Yeah. Decision criteria. ठीक. अब चलना पड़ता आज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Give the heading. IRR can be find out. अब आपने ये लिखा है IRR is what? Project return. Correct. Has two ways. You could write the full form if you want. Internal rate of
ways of calculating IRR. One is the formula method, right? इसको मैं कभी कभी भी यूज पेन एंड पेपर मेथड भी बोलते हैं, या आई लाइक टू कॉल दिस, राइट, इंटरपोलेशन मेथड. क्या बोलते हैं इसको? इंटरपोलेशन मेथड. ठीक, these three are the name. Pen and paper method or interpolation probably you will not get in any book, correct? And then there is a spreadsheet method. अभी थोड़ी देर में spreadsheet भी we will have to open up, right? आज annuities, perpetuities, फिर क्या होगा? कल थियोरी जाएगा, कल आई विल कीप द व्हाट आई डू, एडवांटेज डिसएडवांटेज चारों के लेने, एनपीवी अपना सॉरी ROC, payback period, NPV, IRR, चारों के advantages, disadvantages. I'll make one sheet, right? हर एक का advantage, disadvantage. Okay? चलो, spreadsheet method. ये formula method ना, leave some space here. Spreadsheet method I'll make you write, don't worry. Okay. Spreadsheet में we'll have to open up Excel for your what? Tell me. मैं करेंगे. ठीक है? आ जाओ. चलो आगे. Write down example. A lot of you must have done this essay. I am doing it as a horizontally. A lot of you must have done it vertically. आपको are you feeling a bit of tension because of that? हो सकता है? Tell me. A lot of you must have done it what? Horizontally. Sorry, vertically. But I am writing it horizontally. कोई problem है क्या किसी को? Tell me. Maybe a bit difficult to what maneuver around. But ठीक है. Net cash flow write down. 500 negative. 125, 125, 125, 125, 125. चलो, discounting rate is equal to 10%. चलो, calculate NPV. Without my help, I think you can calculate NPV now. You are professionals in calculating NPV. वो टेबल दे दो एक बार एनपीवी का. टेबल दे दो कितना? डिस्काउंटिंग रेट 10% ना बाबा. देखो टेबल ही खुल रहेगा आपका. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Negative 26.25. Negative 26.25. 25. Everybody getting negative 26.25 or no? So average discounting rate is equal to 5%. पे भी करो. I'll give you the 5% per table as well. So एक minute, if I ask you that boss, at what rate will this NPV become positive? So 5% पे will the NPV fall or rise? Tell me, discounting rate is falling.
will the NPV rise or fall? NPV राइज Rise. करेगा, राइट, तो करो पॉजिटिव आता है क्या कुछ, बोलो। पॉजिटिव फोन जाएगा, जाएगा पॉजिटिव, बताओ कितना है। $41 41 पॉजिटिव आ रहा है क्या? positive. 41 तक 41 आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव 0.25. 0.25 आ रहा है, ठीक as is. Yes, sir. ओके, पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम? चलो, नाउ इसके नीचे नोट लिखो। सर पॉइंट से ऐसे कोई ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा? ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बट सुन, वो एक्चुअली आपने ये दिया और मैंने डायरेक्ट कर दिया था, इसलिए भी हो सकता है वेरिएशन। नोट लिख रहा हूँ, ठीक है 41.19 आ रहा है, ठीक है 1925, ठीक है 19 ले लो। ओके बेटा, 41 पर वट एवर द आंसर, ठीक है। एज वी कैन सी अबाउ दैट at 10% per annum cost of capital at, at 10% per annum cost of capital, NPV is negative. NPV is negative, right? And at 5% per annum cost of capital, क्या है बताओ, is NPV is what? Tell me. Positive, बराबर है। देख लो जरा, ये ओके है। This denotes that the प्रोजेक्ट रिटर्न, अब प्रोजेक्ट रिटर्न क्या हो सकता है? 5% है, 10% है, और इज इट बिटवीन 5 and 10%? टेल मी, बोलो क्या लगता है? प्रोजेक्ट का रिटर्न, नाउ सी व्हेन 5% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक सेकेंड सुनो, at 5% cost of capital NPV is positive, so is the project return higher than the cost of capital or lower than the cost of capital? Tell me. higher, Higher, right? So is that project return is less than 10%, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, less than 10%, and project return is more than 5%, ये ओके है क्या सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम है एवरीबॉडी? इसमें ही नीचे लिखूंगा दैट इज प्रोजेक्ट रिटर्न इज बिटवीन, क्या लिखूं? टेल मी, 5% and 10%, चलेगा क्या? yes sir, एंड वी हैव टू फाइंड इट। ठीक, अब एक टाइमलाइन बनाता हूं, देखो हाउ विल वी फाइंड इट, करेक्ट?
How is the timeline? Have a look. एक dual timeline बनती है. There is a dual timeline. एक zero होता है timeline पे. X axis. Do you know something called as X axis? चलेगा? X axis. ये zero. ये NPV है नीचे. This is NPV below. And above rate है. सुन लो देखो मैं क्या कर रहा हूँ देखो. Left side पे negative at 10%. Have a look. Rate 10%. How much is the NPV? Can you tell me? बोलो. Rate 10% पे how much is the NPV? minus 26.25. Minus 26.25. This is a x axis का line. Minus 26.25. This is zero NPV. We don't know this rate. And do we know that these are 5% पे? Somewhere here. Wait. 5% rate. How much is the NPV? Can you tell me? Positive how much? 41.19. देख लो एक बार. Does this make sense? So can I say that the project return is somewhere in between? Tell me. So देखो 10% correct at what? Tell me. How will you find this in between? It is nothing but there was a interpolation method. Probably you did it in 9th and 10th in school. याद हो तो मालूम नहीं, right? In school you did this method. What was the method? Tell me. Interpolation method. What method? Interpolation. Correct? Interpolation method, what does it say? Two poles are drawn over a x-axis, right? X-axis पे between two poles you have to find a middle value. Correct or not? आराम से सोचो. Tell me. Okay है? बोलो. Tell me yes or no. Okay है? कोई problem? Yes, sir. अब देखो उसमें क्या बोलता है मालूम है? How does it work out? Right? Sir, my basic rate 5% is surely my rate. Is my rate more than 5%? Yes. So I have reached, I am traveling from here, right? And I want to go to 0. So 5% is my rate, correct? Plus, I have to travel how much from here to 0? Tell me. How much I have to travel? NPV line पे, ऊपर की लाइन पे नहीं, sorry, ऊपर की लाइन पे नहीं, नीचे की लाइन पे how much I have to travel? Tell me. From $41.9 positive to 0. So how much I have to travel? Tell me. कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? Now एक मिनट. Can you calculate how much is this total area? X axis पे. From minus 26.25 to 41.19. कितना area है? Tell me. How much is the area? Numerically. 57.44. 57 यानी what you are doing? Sir, 67.44. दोनों को add 67. कर. Correct. Now see sir, I am here at 5%. Correct. I am here at 5% sir, waiting here. Correct. Out of the total area, ये 5% से लेके इधर 10% is how much? Sir 60 कितना बोले आप? 67 point कितना? 44 dollars. But how much do you want to travel to go to 0? How much? 41.19. How much? 41.19. 41.19. Correct. So it will give you a percentage of how much you have to travel from 5. And what is the difference between? How much is this difference of this total area? Tell me. 10% minus 5%. So 5% is the area. Correct. Find the answer. So 5% plus ये कितना आएगा? 41.19 by 67.44. Tell me. How much is the total area? Tell me. Total percentage 41.19. कितना percentage you have to travel from 5% of the total area 67.44? 0.05. 0.05. 0.5 होगा ना मैडम? 5 से भी ज्यादा होगा. 41.19 डिवाइड बाय 67. वो निकालो पहले. Into फिर फेजर 0.05. हाँ बोलो. 0.610. 0.610. वो मैं मल्टीप्लाई करके बता दिया, सॉरी. मल्टीप्लाई करके कोई बात नहीं. बताओ कितना आएगा टोटल? 0.0305. 3.0. 0.0305. 305. So 5% को can I write 0.05 plus 0.0305? How much?
is my IRR of the, this is nothing but the IRR. IRR is that internal or rate of return where NPV becomes what? Tell me. Have a look. 0.0805. 0.0805, that is 8.05%. Is your, so इसके नीचे if you have written this, correct? So note एक बार ये नोट करने दो. कर लो ना, ये लो. This is the derivation of IRR as a formula. पहले मेरे को क्या है सर, टोटल एरिया 67 और ट्रैवल टोटल एरिया 5% करना, करेक्ट? स्टार्ट मेरा 5% से हुआ है. आई वांट टू गो टू 0. इंटरपोलेशन बिटवीन टू पोल्स, करेक्ट? यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू. देखो ये सब कोई क्लास में होता नहीं, मेरे को मैथ्स आता है, आई नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. 8th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर, 8th और 9th स्टैंडर्ड, दिस फॉर्मूला वाज taught in class. I still remember it. Interpolation method. Bolo, is it okay? Note it down. What do you say, Manan? IRR, have you done in college? Tell me. NPV, have you done in college? Is it done or not done yet? No, not done yet. Not done yet. But are you okay with it? What we are doing exactly? Yes. So the IRR formula goes this way, right? The IRR formula लिखो. Let me derive the formula from this. IRR is equal to, सुन लो, what is 5%? Answer. Is it the lower percentage or higher percentage? Lower. Lower percentage, correct? Plus 41.19. The distance that you have to travel, is it NPV at lower rate or NPV at higher rate? Tell me. Bolo. NPV at lower or NPV at higher? 41.19 numerator. NPV at lower rate. NPV at lower rate. ऐसा लिखो, NPV lower rate. The whole divided by, आराम से. When I said 41.19, एक minute. When I said the total area, how did you calculate total area? Tell me. Did you do, एक minute, did you do 41.19 plus negative 26.25? सुनो, कैलकुलेटर पे लो, टेक इट ऑन द कैलकुलेटर, आराम से, गड़बड़ मत करो. पॉजिटिव 41.19 प्लस नेगेटिव 26.25 करो, व्हाट इज द आंसर? डिड यू डू दैट? आंसर क्या आ रहा है, बोलो. हमने नेगेटिव का साइन नहीं लिया. सॉरी, बिना नेगेटिव के साइन भी करना. हाँ एक मिनट, अगर साइन, हाँ यू डिड इट विदाउट साइन, एक मिनट, बट ये आंसर कुछ अलग आ रहा है क्या? दिस इज 41.19 प्लस नेगेटिव 26.25, तो आंसर कुछ 24 या ऐसा कुछ आ रहा होगा. 14. ऐसा कुछ 14.9. 14 पॉइंट, करेक्ट. अब सुन लो, राइट, ये नहीं किया, बट दूसरा बताता हूं आपको अभी. 41.19 माइनस नेगेटिव 26.25, ये करो तो कितना आंसर आता है? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो एक मिनट, शुड आई राइट बिलो एनपीवी लोअर रेट प्लस एनपीवी हायर रेट लिखूं या माइनस एनपीवी हायर रेट लिखूं? माइनस एनपीवी हायर रेट. और इधर ना मैं डायरेक्ट नोट लिख लेता हूं. क्या नोट लिखो, बोलो. ऑलवेज शुड बी व्हाट? क्या होना चाहिए? ऑलवेज शुड बी नेगेटिव. तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एरिया यू विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 10% इज हायर रेट और लोअर रेट? टेल मी. हायर रेट. हायर रेट माइनस, हम खत्म. इधर एक ब्रैकेट बनाओ, ठीक है क्या? देख लो, टेंशन हो गया फॉर्मूला.
अब याद रहेगा क्या फॉर्मूला? सी, द लॉजिक ऑफ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इज it will become so ingrained into your brain that you don't have to take efforts to remember that formula. Is what my logic of deriving the formula in classes. बाकी मजा कुछ नहीं आता, ठीक है? ऐसा कुछ आई गेट सम व्हाट, टेल मी, सम काइंड ऑफ, क्या मतलब बहुत भारी कुछ कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं. इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर. नाउ टेल मी, विल यू एवर फॉरगेट दिस फॉर्मूला? चांस है ऑफ फॉरगेटिंग दिस फॉर्मूला? टेल मी. वेरी लेस चांस. लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बच्चे एफएम में आते ना, बीन टॉट बाय मी मे बी 1 year ago, ठीक है, 1 year 1.5 year ago, व्हेन दे कम टू एएफएम, ओके, उनको ये फॉर्मूला याद रहता है. ये अपना क्या है, दैट इज द लॉजिक हाउ यू रिमेंबर फॉर्मूला. व्हाट डू से सारा? ओके विद इट? मेक सेंस बाबा? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे. गो है. तो एक नोट लिखो. Hence, we can say that the project is earning around 8.05% ना, परसेंट per annum. अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, फॉलो अप. सो इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी is let's say 7.5%, right? Will you accept the project or reject the project? Project is earning 8.05 IRR. Accept. Project is earning, that is IRR of around. So you will accept the project. But Baba, tell me, if this was 15 or 12% per annum, will you accept the project or reject the project? Tell me. Reject the project, Baba. Okay with it? Tell me. Have you already done this? I think you've done this. What is the Manan? Okay. You want to do one? Now, sure. ये तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. Now have a look. One more question I'll give you. We'll do IRR का calculation. Example. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 7,000 negative 1,500 2,700 2,900 5 2,100 and 15. ठीक है. Net cash flow, NPV, discounting rate is equal to 10%. Calculate NPV. चले. कितना आ रहा पॉजिटिव? पॉजिटिव है भी या नहीं? 2, 6, 7, 8 मे बी, आई डोंट नो. 10-12 हजार हो रहा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव आएगा. एक काम करो, इसको चेंज करो, 1,700 कर दो. जस्ट सेकंड ना. देख लो बाबा. एक सेकंड आप करो, भी करो,
15 पे भी करो, दोनों पे करो। I'll give you 15 का रेट। और एक ही सेकंड में मतलब क्या बोलते हैं, 10% पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बोलो। पॉजिटिव आ रहा है 311.4। 311.2, ठीक है। एनपीवी एट 10%, 311.4। 311.4, ठीक है। एनपीवी एट 15%, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये है पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव कितना है नेगेटिव मैडम? सर। एक करो। 555.1। नेगेटिव $555.1। इसको सर आगे वो फॉर्मूले में पुट करें क्या आईआरआर वाले? पुट करो आईआरआर का फॉर्मूला। कर सकते हो आप, मेरे हेल्प के बगैर कर लोगे? एवरीबॉडी बेटा ट्राई करो करो। करो करो करो, एक ही सेकंड में आप करो आईआरआर। क्या लगता है क्या होगा? समवेयर, नाउ टेल मी, इज इट समवेयर? 0.1179। कितना? 0.1179 आ रहा है। 11.79। 1179 यानी 11.8%। यस सर। ठीक है, करो एवरीबॉडी। आर यू गेटिंग?
चलो ओके है क्या? देख लो, everyone getting 11.8% answer. Yes, Tell me. sir. Problem? Anyone having any problem? Is the formula very clear now? पता कैसे लगेगा कि कौन से डिस्काउंटिंग रेट से पॉजिटिव आएगा कौन से नेगेटिव? क्या 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 क्या? सर ये पता कैसे लगेगा देखो, I wanted someone to ask me that. Correct. अब पहले at 10%. Now see, the common agenda seems to be in above question. This question, common agenda क्या है बताओ? What did we start with as the first NPV or first discounting rate? Can you tell me? 10%? 10%. Then we found 10% is negative. So what did we do? Did we go down or did we go up? Go down. Decreased. 5% पे गए या 15% पे गए? Tell me. Yeah. हाँ. So what we thought is, sir, 10% पे negative आ रहा है. That means project is earning less than 10%. So maybe 5%. So second guess was what? Tell me. 5%. बराबर बोल रहा हूँ? Everybody. Yes, sir. But when I came to this question, buddy, correct? I found NPV to be positive at 10%. That means, is my project earning more than 10 or less than 10? More than 10. More than 10. बराबर है? ओके. नो एक और इधर एक ही चीज आपको कराना है. तो टेल मी, इफ at 10%, so your starting point should always be 10% in a question. At least this is for ACCA. Maybe other courses have different rules. ACCA में, right, two things are there. एक तो आया तो ऐसा 10% वाला जो आया है, that will come up, correct? Right? That will come up कि 10% और राइट. जनरली द एग्जामिनर, क्योंकि क्यों मैं बोलता हूं आपको, अगर आप निकालो एनपीवी एट, समझ लो एट 13%, I'll give you the 13% rate. निकालो सर एट 13%, what is the NPV? And then again with 10 and 13 ना, find the IRR. ये IRR है with 10% and 15%. This is the IRR at 10% and 13%. This is after I know that the rate is 11.8%. Correct? देख लो एक बार प्लीज. निकालो. कितना आ रहा है बाबा? 11, 10 एंड 13% पे बोलो. -2 to 9.9. नेगेटिव कैसे आएगा हमारा? ओके, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव कितना? हाँ सर. It's 82.9. कितना कितना? 2.22.9. 82.9.
फिर 82.9. 82.9. ओके, करेक्ट. और IRR कितना आ रहा है बोलो? इज इट कमिंग अ बेटर आंसर? बोलो. करेक्ट. देख लो 10 एंड 13 पे 11.79 नहीं, कुछ अलग आंसर आएगा. थोड़ा सा और क्लोजर टू द IRR आएगा, कुछ अलग आंसर आएगा थोड़ा सा. सर 0.1394. 13.94. मतलब कितना? 13.94. सर 13.10 और 13 के बीच में अगर है 13.94 कैसे आएगा? टेन और 13 के बीच में, ठीक है. तो 10 और 13 के बीच में आना चाहिए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो तूने क्या किया, 311 लेना है तेरे को और 82.9 लेना है. तो व्हाट डिड यू अप्लाई एज फॉर्मूला? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 10%, राइट, लोअर रेट. एनपीवी एट लोअर रेट कितना है? 311.4. 311.4 डिवाइडेड बाय 311.4 माइनस, या प्लस करूं मैं, या माइनस ऑफ माइनस करता हूं. माइनस ऑफ माइनस 82.9 इंटू 3%. 3% मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 10. ठीक है क्या? देखो ना था, how much it? तो सर वो 3% था, मैंने 5% ले लिया डिफरेंस. आप आई ले लिया होगा वही. कितना? 11.9 ही है, 11.8 ही है, या कुछ थोड़ा कम है या ज्यादा है? सर मेरा तो एनपीवी भी गलत आ रहा है. 2.9 नहीं आ रहा है क्या नेगेटिव? नहीं सर, क्या आ रहा है वो मेरे को मालूम नहीं, आपने ही निकाला जो मेरा निकाला. 29.9 आ रहा है सर. कितना? नेगेटिव 229 आ रहा है. अब वो भी हो सकता है 220 कितना 9.9 आ रहा है सर. हो सकता है. देखो एक बार वेरीफाई करो एवरीबॉडी. नेगेटिव यस सर मेरा. हाँ, फिर चेंज कर दो. बार बार चेक नेगेटिव किए इसीलिए. नेगेटिव 229.9 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब करो कैलकुलेट, कितना आता है 11 और 13 के बीच में. तो फिर तो कुछ 11.87 या 8 ऐसा कुछ आएगा. कितना है आंसर तो निकालो. 311.4 प्लस 229.9 विल बी द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर विल 3. 541.3. ठीक है, वो निकालो ना. 10% के ऊपर यानी 0.10 प्लस कितना आएगा? कितना परसेंट, या टोटल बता दो कितना हो रहा है. बोलो मनन, व्हाट डू से बेटा? वंश क्या लगता है बेटा, कितना है? 12.79. 12.7 नहीं रे, गड़बड़ी कर रहा तुम. देखो 0.10 प्लस 311.4 डिवाइड बाय क्या करो 540. 1.3 into 0.03. This is one bracket. Brackets are very important in FM and in life. You know where your limitations are. Correct. कितना है बताओ अभी? ये नीचे 541 सही है ना? 541.3. क्यों इतना टाइम लग रहा है? कुछ 1.1172. क्या? 7.72. 11.73. 7273. 73 क्योंकि आगे 2 के बाद 58. That means एक मिनट. Whenever I do formula method, will it give you perfect answer or will it give you approximate answer?
एक ऊपर आया 11.79, नीचे आया 11.73। अब सर एक्चुअल और एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? आ जाओ एक्सेल, ओपनिंग एक्सेल फॉर योर बैच। Now coming to the spreadsheet method. Okay, आ जाओ। Is the Excel sheet visible to you? Tell me. बोलो। Yes. How to find IRR in Excel sheet? अब वही सेम कैश फ्लोज लेते हैं, just help me with the cash flows. Okay, example 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है ना? Tell me what are the net cash flows? Net cash flow कितने Yes. बता? 7,000 negative, हम्म 1,500, हम्म 1,700, हम्म 2,900, 2,100, 1,500. ओके क्या? अब how to find IRR of these cash flows? Correct? How to find IRR, right? So there is a formula, is equal to IRR, is equal to IRR, bracket open, is equal to IRR. Do it with me. If you are right now in the class, you're doing Excel for the first time, do it with me. Copy down the cash flows left to right in one line properly. Then press is equal to IRR, bracket open, right? There is something called as values, correct? So take your mouse, correct, from 0 to 5th year, drag it. So it will give you B3 to G3, correct? From 0 year till end of project. And close the brackets and press enter. And if it is coming 12%, here open up, increase the decimals. Increase the decimals. Tell me how much is the answer. Bolo. Increase the decimals. Tell me how much is the answer. 2 decimal points increase. If you have not done Excel sheet, kindly log into the Excel sheet, write the cash flows, correct, and put is equal to IRR formula and go on, put the reference of undiscounted cash flows that are there. Tell me. Can I go ahead? Bolo. 11.69. So actual or appropriate answer is 11.69. Approximate answer is what you got 10 and 15 पे, 10 and 13 पे. Were you very close to the main answer 11.69? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, when the distance was more between two rates, was the answer further? देखो, you got an answer when you decrease the space between two what discounting rates. Did you get an answer which was closer to your main answer 11.73? But if you increase the what, tell me, 10 से 15, 5% का difference है, then you get an answer which was farther more away from the appropriate answer. क्या बोलते हैं जनता? Tell me. बराबर बोल रहा हूँ or no? Tell me. See, 11.69 is the answer. Which answer of the two, 10 and 15 का IRR and 10 and 13 का IRR, is closer to your 11.69? Tell me. 10 and 13 या 10 and 15? बोलो. 10 and 13. 10 and 13. तो सबसे पहले प्रोसीजर टू फॉलो. Procedure to follow for IRR फॉर्मूला मेथड. चलो आ जाओ. सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1.
At what rate will you take out NPV? Tell me. Step 1. इधर ऐसा लिखो, if two discounting rates are not given. ठीक है. Step 1. Correct. Calculate. क्या करना? NPV at 10%. Correct. Then calculate NPV at 10%. If NPV is positive, क्या करोगे? या पहले आपने नेगेटिव किया. If NPV is positive at 10%, will you go to 5% or will you go to 15%? Tell me. ऊपर वाले क्वेश्चन में जाके बताओ. If NPV is negative at 10%, go to 5% या go to what? 15%. बोलो. Go to 5%. Go to 5% and calculate NPV. बराबर है? At 5%. But if NPV is positive, क्या करोगे बाबा? At 10%, you go to what? बोलो. 15% या 10% again? बोलो. Oh, sorry, 5%. Tell me. Go to 15% and calculate NPV at 15%. इसके बाद obviously then calculate आएगा. Right? Probably if it is between 10 and 5. अगर 5 पे भी नेगेटिव है तो go to 1%, 1 और 5% के बीच में. But generally वो क्वेश्चन नहीं आता. Right? उसके बाद then calculate आएगा. ठीक. ओके. या step 2. Apply the formula and calculate आएगा. ठीक. उसमें अभी नोट. Make sure that NPV at lower rate positive होना चाहिए या negative होना चाहिए? NPV at lower rate should be positive or negative? Tell me. Positive. Should be positive. And NPV at higher rate will be what? Tell me. Negative. For formula to give better answers. ठीक. अब क्या करो, ये फॉर्मूला जो IRR का है ना, ये टेबल में अपडेट करो इधर ऊपर. And if I'm updating here, should I write that this is an appropriate answer or an approximate answer? ये फॉर्मूला मेथड, पेन एंड पेपर. Appropriate मतलब सही आंसर, approximate मतलब around the correct answer. Tell me. Approx. ये है approximate answer. Correct. And this would be appropriate. But इसका पूरा प्रोसेस we have to write. आ जाओ इसका प्रोसेस लिख लो. So what is the process of this? Let's write down that. Is equal to IRR bracket open, a reference of. एक मिनट. These cash flows, are they discounted cash flows or are they undiscounted cash flows? Can you tell me? Undiscounted. So very important. A reference of undiscounted cash flows from कहां से कहां तक? From year 0 to end of project or year 1 to end of project? Tell me. Year 0 to end of project. From year 0 to end of project. Correct. Bracket close. Appropriate answer. अरे बाबा बहुत हमने एनालिसिस किया है इसमें. We've done a lot of analysis into this. Correct. You will never find this so much analysis anywhere. My what? Tell me. Guarantee to you. Okay. चलो. So could you please scroll down? I need to write down slide number 2. ये लो ना. ये
Step 2, apply the formula. The आंसर उसमें नीचे, राइट. एक और नोट लिखता हूं, ये है नोट 1. वो लिख लिया ऊपर आपने, एवरीबॉडी. रेफरेंस ऑफ अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 0 टू एंड ऑफ. ओके, चलो आ जाओ. स्टेप 2, अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट आईआरआर. नोट 1. एक और नोट 2 लिखना है मेरे को. Can I write note 2? The lesser the distance between lower and higher rate, what will happen? Tell me. The lesser the distance between lower and higher rate for IRR formula calculation, better answer will be, or will the answer be more closer to the appropriate answer, or will the answer be less closer to appropriate answer? Bolo. Tell me. Lesser the distance between lower and higher rate of for IRR formula calculation, the approximate answer will be closer to appropriate answer or will be far away from the appropriate answer. Close. The approximate answer will be closer to the appropriate answer. Correct? जितना जितना distance बढ़ेगा, it will get more and more far away, not closer but far away. अरे ये सब आता है, मतलब you will say MCQs, all these kind of MCQs. ठीक है? I'm just taking it because some or the other were theory MCQs. Honestly, have come up from this part a lot of times, right? Don't blame me. Okay, going so much into technical. Okay, again. थोड़ा सा now I'm going a bit away from IRR for some time. I'll come back to IRR after break. ठीक है? थोड़ा 10 मिनट है. I want to go away, right? Write down a sheet in between. यहाँ तक ओके है. IRR formula done. Are you okay with how IRR is calculated here? चलो, can you do it in Excel? One more cash flow I can give you. Can you calculate IRR? Give me appropriate answer. I don't want approximate answer. Appropriate answer. In Excel, calculate it. How to do it? Guide me. Is equal to write. Eight percent. 8%. 8%. So is equal to IRR. 0 or up to what here? Tell me. Here. Bracket close. 8%. But open it up. Actual कितना है देखो. 8.20%. Everybody getting 8.20%? चलो एक और स्टेप आगे. Can I go ahead? Right down. Now I'll go a bit into some different part. Timing of cash flow. Correct. Small note. Correct.
When I write any cash flow now in 0 year, first year, second year, third year, fourth year, ऐसा लिखो, correct? When I write any cash flow here negative, right? This is called as cash flow in year 0 or cash flow now or today, cash flow today. Now today 0 year, or it is also called as cash flow at start of year 1. What is it called? Cash flow at start of year 1. Correct? So if any kind of wording is used where it says that you will get cash flow or you will have to invest in year 0 year, you have to invest now 0 year, you have to invest today 0 year, you have to invest or you will get some cash flow at the start of year 1, it will be all written in what? 0 year. When it is year 1, what will they call it? They will say end of year 1, सबसे normal end of year 1 or start of year 2 or starting from year 1. आएगा थोड़ी देर में, लिख लो starting from year 1. अरे बहुत हमने we have done lot of analysis, ठीक है? So logically now when I write a cash flow at 2, what do I mean? बोलो. End of what year? End of year 2 or start of what year? Tell me. स्टार्ट ऑफ ईयर 2 होगा इधर, सॉरी स्टार्ट ऑफ ईयर 2 होगा इधर, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 और स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एक मिनट, if I tell you that I will give you $100 at the end of year 1, where will you write it? 1, 0 or 2? Repeat करो वापस से. $100 at the end of year 1, where will you write it? Tell me. सर फर्स्ट वाले में फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो. सुनो सुनो सुनो. If I say that I will give you $100 at the start of year 2, where will you write it? Year 1. Year 1. If I say that I will give you $100 starting from year 1, means what? Year 1. Year 1 only. Correct? If I say that I will give you a cash flow at the end of year 2, मतलब क्या? Second year. That means Start of year 3, मतलब क्या? second year. Correct? Starting from year 2, मतलब क्या? Year 2. समझ में आ रहा है? या ऐसा बोला आई विल गिव यू $100, सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर 2 मतलब क्या? Year 2 Second year में. मतलब चालू होने के टाइम. एक मिनट मतलब फर्स्ट में. स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर 2. जब year 2 चालू हुआ तब से. ईयर 2 कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ईयर में. बस उधर ही गाड़ी रुक जाने से. स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर 3 बोला तो सेकेंड ईयर एंड, बट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 3 बोला तो क्या? टेल मी. थर्ड ईयर. समझ में आ रहा है? द स्मॉल लाइन दैट इज देयर इन बिटवीन ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड्स, ये यूजेज ऑफ वर्ड्स इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट, लाइफ इज वेरी इजी इन एफएम. इसके अलावा कुछ आया ना, कुछ भी नहीं तुम्हारे बुक में, मेरी गारंटी. ये 6 वर्डिंग है तो ये फॉर एवरी ईयर दीज 3 टाइप्स ऑफ वर्डिंग्स, इफ यू लीव देम देयर इज नथिंग अदर देन दिस. हाँ एक और है, राइट? हाँ राइट. अगर मैं बोलूं कैश फ्लो इन अरियर्स, सुन लो, नीचे लिखो इधर नोट, इसके नीचे नोट, कैश फ्लो इन अरियर्स फॉर ईयर 2 या ईयर 1, एक मिनट, दैट इज
Arrears नहीं, रुको 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 रुको, हाँ arrears for year 1, that is end of year 1, end of year 1। मैं क्यों लिखा रहा हूँ देखो, बट मैं बोलूं कैश फ्लो इन एडवांस फॉर ईयर 1, इसका मतलब बता सकते हो? अरियर्स मीन्स व्हाट? एट द एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट? अरियर्स मीन्स पूरा ईयर खत्म होने के बाद। बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टू गिव यू कैश फ्लो इन एडवांस इन ईयर 1 मीन्स व्हाट? एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 और एट द एंड ऑफ ईयर 1? Start of year 1. That only means start of year 1 means what? Tell me. Yes. जीरो ईयर। अरे इसके अलावा आपको ये लास्ट दो थे, इसके अलावा आपको यू गो टू एनी बुक, कोई भी क्वेश्चन जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं आता, मेरी गारंटी। ठीक है क्या? देख लो एक बार, ओके विद इट, कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे। जस्ट अ बिट ऑफ IRR से थोड़ा ब्रेक। आर यू ओके विद IRR? टेल मी, आर यू ओके विद टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो? नाउ गोइंग अहेड, दिस इज द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। एक लास्ट 2 मिनट लिख लो, IRR, राइट, डिसीजन क्राइटेरिया, इसके बाद एनालिसिस करना है IRR का, डिसीजन क्राइटेरिया। Which project will you choose? Tell me. 13%। दूसरा है कंपनी ए हैज टारगेट ऑफ 8% IRR। इस प्रोजेक्ट का IRR 5% है, will you accept the project? Tell me. Target is 8%, 5% reject. But if project IRR 15%, will you accept the project? Yes. Simple and sweet. Correct. देख लो, कोई प्रॉब्लम? जनता ओके विद इट, डिसीजन क्राइटेरिया। चलो आगे फिर। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन IRR टेबल बना लो, उसके बाद I'll give you a break। ठीक है? IRR प्लस टाइमिंग ऑफ कैश, टाइमिंग नहीं सॉरी, IRR प्लस कैश फ्लो टाइप, करेक्ट? एक होता है कन्वेंशनल कैश फ्लो। व्हाट आर कन्वेंशनल कैश फ्लो? थोड़ी देर में आ जाएगा कन्वेंशनल। एंड देयर आर अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। ठीक है? चल, कन्वेंशनल कैश फ्लो में समथिंग, अनकन्वेंशनल में देयर आर 2 टाइप्स। टाइप 1 अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज, UCF लिखता हूं, अनकन्वेंशनल टाइप 1, और टाइप 2 अनकन्वेंशनल। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वी विल डू दिस। ऑलमोस्ट 8:02, 8:22 तक आ जाए, विल गो अप टू 9:30, 9:35।
चलो, can we start? Tell me. अभी you don't have to do anything here. थोड़ा सा everybody back. Can we start? आगे बाप. Are you all back? Yes. चलो बढ़िया. आ जाओ. Now see what are conventional cash flows and what are unconventional. Hey, unconventional लिखा मैंने. Sorry. Right, non-conventional cash flows. What will you write? कट करो. Non, क्योंकि वो बुक में वर्ड नॉन कन्वेंशनल यूज है, तो प्लीज नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो लिखो. NCF, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो. सॉरी यार, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस. ओके, टेल मी. Sure. Non-conventional cash flows. Now hear me out. What are conventional cash flows? Correct. Conventional cash flows are very easy to identify. अभी तक whatever we have done are conventional cash flows. Sir, negative at the start, then positive. सही है क्या? देख लो. These are called as conventional. Conventional means what? You invest something, you get every year something in return. इसमें कोई problem? Conventional cash flows? Tell me. बोलो. चले. Tell me. Conventional cash flows. Can we go to conventional cash flows? Sure. So, conventional cash flows is you take any cash flow conventional and you try to find IRR of that cash flow. ठीक है? minus 42,000. चलेगा? So find out what is the IRR of this cash flow is equal to IRR. Well, how much is the IRR? Tell me. 11.84%. Everyone getting 11.84? I am what? Not tensed about this per se. Generally in conventional cash flow, right? You will get only one IRR. Even if I change values, देखो 5,000, 6,000, correct? It can go to negative. But are you getting an IRR? That means here, should you even think about the project? Tell me. Is the project earning something or are you losing money in the project? Tell me. Losing money. So Losing IRR money. may be positive or negative, but you get only one IRR. How many IRRs? Tell me. One IRR. So write down here, you will get positive or negative IRR. But only one IRR will be there. ये one IRR को ये आया है, has come into one of the exams. Only one IRR, correct? Okay क्या देख लो. कोई problem? कन्वेंशनल कैश फ्लो मतलब सिर्फ 0 ईयर में नेगेटिव होगा, बाकी समय पॉजिटिव, बस वही है कन्वेंशनल कैश फ्लो. हाँ, 0 year negative and then positive till end of project, whatever, 5 years, 6 years, 10 years, 20 years, 30 years. First negative, then positive. In that case, tell me, IRR is what? 17 point. अभी इधर जो आया negative हो या positive हो, but is there a return and only one return of that cash flow? What is that one return? Tell me. Only one IRR will come. But एक minute,
सर कुछ भी क्या बोल रहे हैं, 1 IRR ही तो आ रहा है सब जगह, हर टाइम 1 IRR ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। आ जाओ, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, करेक्ट। और आगे टाइप 1 लिखता हूं, आपने टाइप 1 लिखा है ना, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो टाइप 1। देखो अभी हाउ आई एम वर्किंग दिस आउट, करेक्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ IRR, करेक्ट। ये आएगा अगेन, दिस विल बी रिपीटेड व्हेन वी आर डूइंग व्हाट, टेल मी। वी आर डूइंग basically advantages and disadvantages, correct। चल, so in this case थोड़ा सा buckle up, correct। देखो what I am doing, first negative then positive, correct। समझ लो 15,000, correct। then negative 9,000, ठीक। then negative 14,000 and then negative 20,000। IRR आ रहा है क्या? और is there an error that has arisen, tell me। क्या बोलती जनता, tell me, is there an error, are you able to find IRR, tell me। देखो G18 से इधर तक ले लेता हूं, F18 है क्या IRR, आर यू एबल टू फाइंड, और इज देयर एन एरर, टेल मी, बोलो। ऐसा हो सकता है, सी देयर आर प्रोजेक्ट्स, राइट। सी लुक एट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टुडे ओनली विल यू bring in all the initial investment and invest into the business, or investment will happen phase wise, tell me, tell me, phase wise। phase wise। पहले टुडे सम इन्वेस्टमेंट, सेकंड ईयर 10 पे सम इन्वेस्टमेंट, फोर्थ ईयर 10 पे सम इन्वेस्टमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करेक्ट है क्या? हैव अ लुक एट इट, मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस, बट इस ईयर में नेगेटिव है, हाँ कुछ इनफ्लो भी तो हुआ ही होगा। इनफ्लो हुआ होगा ना, बट प्रॉब्लम क्या है, अब जो ये IRR व्हाटएवर formula that you are putting up, right, or trying to find the rate of return of the project, if the cash flow is negative, starts with negative, positive, negative, positive, and ends with negative, in between also it is what, one positive, one negative, one positive, one negative, starts with negative, ends with negative, and in between also it is positive, negative, positive, negative, positive, negative। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। इन दैट केस अब देखो, अगर 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 एक मिनट, मैं अगर 5th ईयर डाल दूं इधर, राइट, एंड आई पुट अप माइनस और पॉजिटिव 60,000, ठीक, एंड आई अगेन कैलकुलेट IRR, तो IRR आ रहा है क्या, देखो, टेल मी, यस सर आ रहे हैं। आ रहा है, बट वही है 60,000 निकाल दो या ये 5,000 भी कर दो तो भी IRR आ रहा है क्या, देखो बच्चा लोग, बट ये डिलीट कर दो तो IRR चला गया, because it considers it as 0, right। so in that case tell me, if I write something, देखो इधर अगर लिखो, करेक्ट, क्या लिख रहा हूं देखो, 0 1 2 3 एंड 4 लिख रहा हूं, करेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंडिंग विथ सॉरी पॉजिटिव एंडिंग विथ नेगेटिव, correct। in this case will you have an IRR or will you have an error and you will not be able to find IRR, or 0 IRRs will be achieved, tell me, बोलो, tell me, error एरर आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, मतलब 0 IRR receive, so Yes. write down you will get an error and no IRR or 0 IRR will be received। ओके है क्या, टेल मी, व्हाट डू यू से जनता। तो उसका मतलब इस ईयर के अंदर अगर नेगेटिव कैश फ्लो है, तो उसके अंदर जो उस साल कैश इनफ्लो हुआ होगा वो एडजस्ट होकर नेगेटिव नेट अमाउंट आ रही है। हाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो थर्ड ईयर में मे बी सेकेंड ईयर के एंड पे जो नेगेटिव मैंने लिखा है, राइट, सुन लो, 5,000 पॉजिटिव था और 7,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो नेगेटिव कितना हुआ, 2,000 आया, सम मनी हैज कम, बट एट द एंड यू आर हैविंग अ आउटफ्लो दैट इज देयर, तो द लॉजिक सेज that negative positive negative positive negative positive negative positive ending with negative, again I'm saying start with negative, end with negative, and in between also what, alternate positive and negatives, correct।
will you have any IRR calculation or will you never have IRR calculation? Tell me. Calculation. No IRR? Everybody okay with it? किसी को इधर problem है क्या? Tell me. What do you say, Manu? Makes sense. Vilakshana, what do you say? Vilakshana is there. But how are you? You're not there in class for a few days. Start में what happened? Okay, no everything. बोलो ठीक है क्या? Should we go ahead? बोलो. Now the type 2 cash flow. Type 2 cash flow को pending रखता. चलेगा क्या? ये ही digest. Are you able to digest this part? पहले tell me. Or not able to digest? Tell me. मैं एक आपको होमवर्क देता हूं. टाइप 2 लिख लो. टाइप 2 I'll not explain it today. I'll explain it tomorrow. लिखो. टाइप 2 NCF लिख लो पहले. 0, 1, 2, 3 and 4. Starts with negative, positive, 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 negative. ठीक. यहाँ पे क्या होगा वो फाइंड आउट कर. राइट. आराम से. I will give you a homework question, right, which will help you understand what this question. एक मिनट इधर पेस्ट कर रहा हूं. देखो. Are you able to see this cash flows? Negative, positive, 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 and then negative. बराबर है क्या? देख लो. कोई प्रॉब्लम? Everybody, is the question visible to you? इस पे ना, can you find NPV here? NPV at 6.767%. 6.767%. Yeah, better. Right? Almost around 7%. NPV at 7%. Very close to zero आएगा ये. Correct? And also NPV at 65%. ठीक है. या मैं काम करता हूँ. रुको. What I'll do? Wait. What I have to give? मैं दे देता हूँ. 6.767% सुन लो. 65.36%. कुछ रीजन है जो मैं बोल रहा हूँ जिस वजह से. करेक्ट. I'll give you discounting factors at what? 6.767. चलेगा? If I give you discounting factor at 6.767 and 65.36, will you be comfortable doing the question? Tell me. बोलो. खाली मल्टीप्लाई करके आंसर तो लाना है. कर लोगे? Tell me. ले लो डिस्काउंटिंग फैक्टर. यहाँ दे देता हूँ. Here है discounting factor. देख लो. And this is what? Tell me. ठीक है. निकाल लोगे NPV? Tell me. In both the cases, discounting factor is given. Will you be able to calculate? I will give you this Excel sheet. चलेगा क्या? NPV निकाल लोगे? Tomorrow can we discuss this? जैसे कल NPV एनालिसिस थोड़ा सा याद है, तो आज NPV एनालिसिस लिखने के लिए इजी हो गया. Can you do this? Tell me. या एक काम करता हूँ. Wait. I will put up this in the group. चलेगा? रुको. Up to 3 decimal point ले लेता हूँ and I'll put it up. Excel sheet also I'm going to share. Don't worry about it. ठीक है. चलेगा ना रे? बोलो. Will you be able to find NPV? Tell me. I'm putting it in the group. ठीक है. ये रहा. कर लोगे. देखो मैंने ग्रुप में डाल दिया. Today's homework. So you leave 4-5 lines here, 5 lines, 6 lines इधर. 5 to 6 lines. Correct. You will do this tomorrow. क्योंकि आज ना बहुत हेवी जाएगा. चलेगा क्या? Can I go ahead? If you're okay with this.
कर लोगे? अरे कुछ तो बोलो, कर लोगे? Yes. Anybody, everybody okay with it? Tell me. बोलो. Can I go ahead? Everybody. बोलो. What do you say? आशीष क्या लगता है? Okay or no? Not really okay. बोलो. ओके सर। Okay. चलो मैं. Tell me. This is the Excel sheet that we have done. चलो एक मिनट, अपना काम Excel sheet का हो गया. Now come to this part. Write down next page. अगला heading in your book. Correct. Right, next heading, annuity. Annuity. Before I explain annuity, थोड़ा सा take a pause and think about annuity. Have a look. Something I am telling you right now, okay, may be a bit weird for you, correct? But go with the flow. Don't write it, okay? Maybe I am asking you something, you will judge me for that. 5 into 1, 5 into 3. How much? 5 into 5, 5 into 7. Add all of them. How much is the total? बोलो. Total कितना है? 80। 80. This is how you did. Could I have done this in a better way? देख लो सर, देखो ये ऐसा एक एक आंसर निकालने का, और यू डिड नॉट हैव टू फाइंड आंसर फॉर ईच एंड एवरी वन, करेक्ट? सर टेक 5 कॉमन आउटसाइड, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. इससे भी आंसर आ जाता क्या? जस्ट वेरीफाई whether answer would have come with this. यस सर। Still would it be 80 only? Everybody getting 80? कोई प्रॉब्लम? तो देन राइट डाउन एन्युटी. आपने हेडिंग लिखा है, करेक्ट? उसका टेबल बना लो, देन विल डू वन एग्जाम. रहने दो ये एन्युटी. करेक्ट. अब आ जाओ नेक्स्ट. आई एम राइटिंग एन्युटी टेबल. थोड़ा इजी है, लाइटर टॉपिक है, तो आई हैव टेकन दिस, करेक्ट? राइट डाउन बेसिक एन्युटी. ऐसा लिखो बेसिक एन्युटी. ऐसा लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ ईयर. ठीक. सेकेंड, 3 है, 3 एन्युटी स्टार्टिंग लेटर. इस तरह एन्युटी स्टार्टिंग नाउ. और इसमें चौथा लिखो एन्युटी प्लस आईआरआर. ये बढ़िया है. इसमें देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड फ्रॉम द एग्जाम किट. एमसीक्यूज आएंगे व्हिच वी कैन सॉल्व फ्रॉम द एग्जाम. Okay, leave some space. There will be one formula here, there will be one formula here, there will be one formula here, there will be one formula here.
लिखो example. Company A has following cash flows. Correct? 1, 2, 3, 4, and 5. Net cash flow 5,000 negative. 4 years ago, 1750, 1750, 1750. Discounting rate is equal to 10. Calculate NPV. कैसे कैलकुलेट करोगे? 10% दे दो आपको, थोड़ा ज्यादा एनपीवी प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है, गिविंग यू लॉट ऑफ व्हाट, बट you will really enjoy when this base is very perfect. Going ahead, it will be easier. Chal, how do you do this? 0, 1, 2, 3, and 4. Net cash flow. Discounting factor at 10%. I understand this. 5,000. One 0.909, 0.826, 0.751, and 0.683. Now only focus from year 1 to 4, right? Do you see a similarity between this explanation wala question, ye wala, and the question that you are doing now? कोई similarity है from year 1 to 4? Cash inflows are same. Cash inflows are same. वहां पे 5 कॉमन था, यहाँ पे what is common? Tell me. 1,750. Cash inflow is common. तो देखो, I could have done what? This multiplied by this, this multiplied by this, this multiplied by this, this multiplied by this, adding all of them together. Correct? So whatever answer I get and add them all together. Correct? Or I could have done this way. Sir, 1750 का cash flow multiplied by bracket में 0.909 plus 0.826 plus 0.751 plus 0.683. निकालो कितना आता है? Sum of, I can call this sum of present value of all future cash flows. अब ऐसा लिखो क्या? Sum of present value of even cash flows which are repeating for how many years? Tell me. 1, 2, 3, and 4. Even cash flow repeating for what? चलेगा क्या? 4 years. इसी को एन्युटी भी बोलते हैं. बोलो कितना है? 1750 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द ब्रैकेट में एडिशन? .909 plus 0.826 plus 0.751 plus point 45.7. कितना कितना? 5545.75. ओके टोटल. ये मैडम ये बताओ ना, मैं मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 पॉइंट समथिंग है. पूरा 3.169. 3.169. करेक्ट. तो कितना? 55 बोले मैडम आप? 55 हाँ 45.75. $0.75. बराबर है क्या? एवरीबॉडी गेटिंग दिस आंसर? Yes, sir. ठीक है. ओके. अब ना देयर इज अ टेबल इन द मेन, आपके ये एग्जाम किट में और स्टडी टेक्स्ट में टेबल है. जाओ जरा, एन्युटी फैक्टर दिख रहा है, राइट? जब भी whenever there is an even cash flow that is repeated n number of years, where you can count the number of years where same cash flow is repeated. वापस रिपीट करो. When you can count the number of years the cash flow is repeated, tell me which cash flow is repeated. First tell me which is the even cash flow. Tell me. Even cash flow. बोलो. What is the even cash flow? 1750 or 5000? Tell me. 1750. 1750.
right? And it is repeating for how many years? N years. Yeah. So इधर अगर मैं लिखूं, right? So 1750 is repeated, is E1 cash flow, right? Which is repeated for 4 years. Correct? And is it starting from end of first year or starting later on or starting from 0 year? पहले वो बताओ. Starting Starting from from end of first. it. ठीक है क्या? So 1750 is E1 cash flow repeated for 4 years starting from end of year 1. Okay क्या कोई problem? Tell me. Therefore, अब आपने जो ये factor, this is called as actually annuity factor. Sir क्या बोल रहे हो? If you have a cash flow that starts from first year, सुन लो, starts from first year and it is an E1 cash flow and it is repeated for n years. All those three things coming together, correct? You can go to the what table here. Do you see something similar? 3.170. आपने निकाला 3.169. When I round it off, what is it? 3.170 is your annuity factor of an E1 cash flow at 10%, repeating for 4 years. वापस repeat करता हूं. So logically, the formula, write down PV of perpetuity. एक मिनट पहले ये कर लो, एक मिनट इधर एनपीवी निकाल लो. इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, ऐसा लिखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव प्लस, नाउ कैन आई राइट सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1750 फ्रॉम ईयर 1 रिपीटेड 4 टाइम्स. ठीक है क्या? मेक सेंस? उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? माइनस एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब सेम कैश फ्लो repeated for n number of years. Same cash flow repeated for n number of years. Correct? So negative 5000 plus क्या करूं? बोलो, तुमने निकाला है ऑलरेडी. ये क्या है? 5545.75. यानी how much is NPV बाबा? Tell me. 545.75. Everybody getting this? चलो फिर आगे. Are you okay with me saying that this is an annuity? Annuity means what? Annual cash flow repeating for n number of years, right? So write down annuity means what? Same cash flow repeating n number of years. Okay क्या बाबा? Tell me annuity का मतलब. Makes sense? So एक second. Can I write formula like this? PV, a sum of PV of annuity cash flow of an annuity is equal to same cash flow को अगर E1 cash flow नाम दो. E1 means what? Same cash flow. E1 cash flow repeating for n years multiplied by annuity factor from the annuity factor table, discounting rate percentage, comma n years. ये n और ये n सेम है क्या? We will verify this formula, don't worry. ठीक है, बट वही क्या है कि देखो E1 कैश फ्लो 1750 और 3.169 have I got from the annuity table as well? 3.170. Almost answer will be similar. बट ये फॉर्मूला लिखो, इसको एक ही मिनट में टेस्ट करते, एक एग्जांपल से तुरंत टेस्ट कर लेते. पहले लिख लो, this n and this n is same, both n are same, both n same. ठीक है, चलो एक उसके नीचे एग्जांपल. कंपनी A will receive
$700 every year. From year 1. एन्युटी होने के लिए ये भी जरूरी है कि हमेशा स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1 होना चाहिए। क्या क्या क्या? सर एन्युटी होने के लिए ये भी जरूरी है कि हमेशा स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1 होना हाँ, चाहिए। यस। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसमें लिखो बेसिक एन्युटी। ये खाली बेसिक एन्युटी के लिए, बराबर है। दैट इज बेसिक एन्युटी का ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? स्टार्ट ऑफ व्हाट या एंड ऑफ ईयर 1। दैट इज एंड ऑफ ईयर 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर एंड ऑफ ईयर 1 है और एन्युटी है, करेक्ट, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है क्या? चलो आ जाओ। फ्रॉम ईयर 1 फॉर 5 years, initial investment is equal to 2,500. Discounting rate 12%. Calculate NPV. सबसे पहले कैश फ्लोज प्लॉट करो, बोलो। 1 2 3। कितने साल के लिए कैश फ्लोज बनाओ? 4 years के लिए बनाओ या 5 years के लिए? टेल मी दैट। बोलो। पहला मेरे को बताओ, 700 रिसीव कब से होगा? 0 year से या 1st year से? देख लो क्वेश्चन में। बोलो। इन हाउ मेनी और इन विच ईयर विल 700 स्टार्ट? एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर में आएगा वो बता। चलो। 0 ईयर। हाउ मच? 2,500। एंड फ्रॉम ईयर 1 बोला है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 बोला है, मतलब क्या? ईयर 1 एंड और 0 ईयर। टेल मी। जीरो फर्स्ट ईयर का एंड। तो ये देखो 700 कितनी बार 700 मिल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स आर यू गेटिंग 700? फ्रॉम ईयर 1 फॉर 5 years मींस व्हाट? 5 times। तो अब पहले आइडेंटिफाई करो, आर दीज इवन कैश फ्लोस? पहला टेस्ट, बोलो क्या है? इवन कैश फ्लोस। करेक्ट है क्या? इवन कैश फ्लोस कितने साल के लिए रिपीट हो रहा है? टेल मी। 5 years. 8 साल। 5 years। एंड इज इट अ बेसिक एन्युटी और एडवांस एन्युटी, या कुछ स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग नाउ है? टेल मी। बेसिक एन्युटी है या एन्युटी कुछ अलग है? टेल मी। बेसिक एन्युटी। बेसिक। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ sum of present value of an annuity, basic annuity, correct, is equal to, ये 2500 बाद में लेके आ जाएंगे। ठीक है? आपका इवन कैश फ्लो 700 रिपीटिंग फॉर 5 years मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंट रेट कितना लो? 12%, कॉमा हाउ मेनी इयर्स इज द कैश फ्लो रिपीटिंग? टेल मी। 5 years। करेक्ट। तो आ जाओ, इज इक्वल टू 700, 12% चाहिए ना आपको। एन्युटी टेबल में आना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग टेबल में नहीं। एन्युटी आ जाओ। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? 12% 5 years, बोलो। सो 700 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? हाँ बोलो। 3.605। 3.605। तो निकालो हाउ मच इज द टोटल। सो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेसिक एन्युटी कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई नो इज 2,500 नेगेटिव प्लस दिस, हाउ मच इज दिस? बोलो कितना है बाबा? सेवन हंड्रेड to 3.605, how much is it? 2523.5। 2523.5। $23.5, correct. Therefore NPV कितना से? Tell me. 23.5. 3.5। 5 positive. Are you okay? Tell me. Make sense? एक आप खुद करोगे without my help? Tell me. One, will you do it on your own without my help? बोलो। चलो, I'll just make you write the question. Exam. Correct. Company A will receive
$1,200 from start of year 2 for 7 years. Initial investment. Initial investment कितना लेते हैं? $7,000. Discounting rate is equal to 9%. करेक्ट. मैं 9% का टेबल आपको एन्युटी टेबल दे देता हूँ. आई होप एवरीवन हैज डाउनलोडेड दैट. जो बुक आपको हो गया. ओके. चलो बोलो. कैन यू डू इट ऑन योर ओन और माय हेल्प इज रिक्वायर्ड? करो करो. डू इट ऑन योर ओन. टेल मी whether that is okay or are you able to tackle 9% annuity table. First tell me, in which year is 1200 starting? Second year or first year? Second year. Start of year 2 means what? फर्स्ट ईयर. First year. End of year 2 होता तो क्या होता मैडम? Starting from year 2 बोला क्या मैंने? Start of year 2. Year 2 का start मतलब क्या? बोलो. First year का End of year 1. तो end of year 1 से अगर है तो is it a basic annuity or not a basic annuity? पहले ये बताओ. Basic annuity. And it is repeating for how many years? How many years? For 7 years बोला है. मतलब कितनी बार रिपीट होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन. चलो फाइंड आउट द आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प नाउ. क्या बोलता है वंश? इजी है. यस सर, ठीक है. ठीक है. चलो आज अगर आपका ये हो गया तो आज आपको छोड़ दूंगा. चलो ओके क्या? ये करके छोड़ दूंगा आज. बिकॉज अभी वो मैं आगे नहीं जा सकता. ठीक है. मैं आगे गया तो आप और कंफ्यूज हो गए. कितना आ रहा है एनपीवी? कैलकुलेट एनपीवी. सर तो सम ऑफ पीवी ऑफ एन्युटी है वो 6039.6 आ रहा है. 6039.6 39.6 और 7000 नेगेटिव है. बराबर है. प्लस यानी कुछ नेगेटिव एनपीवी आएगा. 961.4 60.4. नेगेटिव. एवरीवन गेटिंग दिस? सर 960 आएगा. 960 आ 960 रहा है. आएगा. क्या वोट है? मेरा मैथ्स खराब है. मेरा तो बहुत ही खराब है. बल्ले बल्ले मैथ्स. करेक्ट. $960.4 नेगेटिव. एवरीबॉडी गेटिंग द आंसर? थोड़ा नैक ऑफ इट आ रहा है क्या या नहीं समझ में आ रहा है? टेल मी. आर यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट और नो? बोलो. चले एक और क्वेश्चन दू. 2 क्वेश्चन होमवर्क दू. बोलो. अब मैं अगर ना सेम क्वेश्चन दू आपको, सुनो, और 1200 की जगह 1500 का आपको कैश फ्लो दू फॉर 7 years सेम एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 7000. विल योर एनपीवी गो अप और एनपीवी गो डाउन? टेल मी. सर गो अप. गो अप. 2-3 क्वेश्चन दो आपको होमवर्क. यस सर. आ जाओ होमवर्क दे देता हूँ.
9 ईयर दे देता हूँ, ठीक है, 1200 होमवर्क है, राइट। दूसरा दे देता हूँ 1500, ठीक, फॉर 5 years, इनिशियल इन्वेस्टमेंट $5,000, डिस्काउंटिंग रेट 11%। अब आपके पास बुक है तो आप उसमें से कैलकुलेट एनपीवी कर लोगे। 2 क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। वी विल देन रैप इट अप फॉर टुडे। देखो कल मैं अभी बोल रहा हूँ वो आईआरआर खत्म होगा, एन्युटी खत्म होगा ये, राइट। परपेचुटी प्रॉब्ली शुरू होके एक लेवल तक आ जाएगा, बट वी विल डू टुमारो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, करेक्ट, ऑफ दिस व्हाट डू यू से आरओसी, एटलीस्ट वो एक थियरी क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा। So I will keep the notes of advantages and disadvantages of ROC ready. ROC and payback दोनों का हो जाएगा, I think कल, right? So what we can do is 995 के बाद थोड़ा theory करके I can leave you. चलेगा? आज I am letting you leave early only. Tomorrow last 20-25 minutes theory कर लेंगे. चलेगा क्या? Tell me. Okay. I will keep the notes for theory ready. Okay. So you don't have to think much. Chalo then guys. Bye bye. We will meet now tomorrow 6:30. Till then, bye bye. Take care of your health. Good night. See you. Bye. Thank you, sir. Welcome. सर वो यूपीआई आईडी Yes, you can. Okay, guys. Bye.